Good evening, friends. We have with us Honorable Power and NRE Minister, Shri R.K. Singh ji, and to his right, we have Power Secretary, Shri Pankaj Agrawal ji. As you are already aware that the Honorable Minister presided over the Conference of Power and New and Renewable Energy, Ministers and Secretaries of States and UTs. Without wasting any time, I'll request Honorable Minister to make his opening remarks, and thereafter you can ask your questions. So, over the day, the ministers of the power ministers of the states and the principal secretaries of power and the CMDs of the utilities, the DISCOMs, GENCOs, etc., have been discussing the power system in our country. The power system has undergone a transformation. You're all aware of the transformation. We've added huge capacities. We've connected the whole country into one grid. We've ensured universal access. We have emerged as the fastest growing renewable energy capacity in the world. We have achieved our NDC targets well ahead of time. We have also made the system viable. The losses have come down. The losses have come down from 27% in 2014. The AT&C losses came down to 16.89% in the financial year 21-22. In the financial year 22, it came down to 16.89%. Now, in the financial year 22-23, it has come down further. It has come down to 15.8%. It has come down by 1% more. So the system is becoming more and more viable every day. The overdues of GENCOs have almost disappeared. The GENCOs payments are totally up to date. We also, and of course, our strengthening of the system under RDSS is going on. It has started. We would have expected the speed to be more, but in starting there are difficulties, but the work has started. We had carried out a lot of system strengthening under Deen Dayal Gram Jyoti Yojana and the IPDS and Saubhagya. Now we are carrying that forward. And already we have improved the system in a manner that the availability of power in rural areas, which was about 12 hours in the rural areas, in 2015 has now gone up to about 22 hours, 21 and a half odd hours. And in urban areas, it has gone up to 23 and a half hours. But we discussed this, that it has to be 24 hours. We have improved the system already. We are improving it more under the RDSS, so that's what we discussed. We also discussed the challenges which face us as a system. So while we and the states took, we expressed satisfaction at the fact that we have improved the system, we also looked at the challenges. The demand has been growing rapidly. The demand has grown by 20%. From August, it grew in 20%. September, 20%. October, again 20%. So, and first week of November also, it's increasing by 22,000 megawatts on a daily basis. So that is a challenge. We discussed that. We decided that it is absolutely essential that all the states have all their generating units working at full capacity. We also looked at capacity additions, especially in renewables, and the need to increase the pace of capacity addition to meet the growing demand. We looked at that. We looked at the progress of the green energy corridors and how that progress can be enhanced. And by and large, we also looked at the new RPO which has come out, Renewable Purchase Obligation. The new RPO also has mandatory targets for DRE, that is the distributed generation, that is rooftop and Kusum. We reviewed Kusum also, and we saw that progress is being made in Kusum in the solarization of agriculture. That was also emphasized. We looked at what we have to
achieve in terms of our targets set under Glasgow, the revised NDCs which India pledged under Glasgow, and where we are at. So we looked at all that. We looked at resource adequacy, the demand, how the demand is increasing, and the planning for that, for meeting that increased demand. So we looked at all that. So by and large, the deliberations were satisfactory. We have agreed that we need to add more capacity as fast as possible, both conventional as well as renewable, more renewable than conventional. But we are very clear in our mind that we are not going to compromise with the availability of power for growth. Our country is growing rapidly, and for that growth, we'll need to add capacities rapidly, and we are not going to compromise on the availability of electricity for growth, no matter what. We'll be adding storage with renewable energy to have round-the-clock renewable energy, but at the same time, the role of conventional power, thermal, will continue until this round-the-clock renewable energy becomes substantial. The role of thermal energies cannot be ruled out. So we feel that we are okay. We feel that we are fine. We will increase our capacities to meet our challenges. We have already strengthened our transmission system. It's already one of the better transmission systems in the world. The general network access which we have put in place is a world leader. I mean, no other country has that. And we give connectivity faster than any other developed country in the world already. And it is because of the fact that we have this advantage in transmission that we have an advantage in green hydrogen, green ammonia. We discussed that as well. We discussed the incentives which the states are giving and what incentives can be given for setting up green hydrogen, green ammonia in different corners of the country. We have about 5.8 million tons of green hydrogen manufacturing capacity coming up in different parts of the country. This also is one of the biggest capacities in the world for green hydrogen, green ammonia. So, as I said, we are in a satisfactory position. Questions? Okay. I've been talking right since the morning. हम लोगों ने आज ऊर्जा मंत्रियों के साथ और विभिन्न राज्यों के ऊर्जा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जनरेशन कंपनीज के सीएमडीज के साथ बैठक की और पूरे पावर सिस्टम के व्यवस्था के बारे में जायजा लिया। बैठक में हम लोगों ने नोट किया, सभी मंत्रियों ने, कि हम लोगों ने पिछले वर्षों में सभी लोग मिल करके, हम और राज्य सभी लोग मिल करके हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन ला दिया है। हम लोग पहले डेफिसिट थे, हम लोगों ने इतना कैपेसिटी जोड़ा कि अब हम जितनी आवश्यकता है बिजली की उतनी बिजली पैदा कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोगों ने मिल करके पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, जो आज दुनिया के बेहतरीन ग्रिड में से एक माना जाता है। हमारे ग्रिड में आप कहीं भी जुड़ जाइए, हम लोगों ने जनरल नेटवर्क एक्सेस लागू कर दिया है। आप कहीं भी ग्रिड से जुड़िए, आप पूरे देश से जुड़ जाते हैं। हम कनेक्टिविटी 50-60 दिनों में दे देते हैं। दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में कनेक्टिविटी का एप्लीकेशन 2.5 साल 3 साल में स्वीकृत होता है। हम दुनिया में अग्रणी देश हो गए। हमने अपनी व्यवस्था को सुधार दिया है। अब पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता थी 12 घंटे 2015 में, आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ कर करके 21.5-22 घंटे हो गई है। अर्बन एरियाज में बिजली की उपलब्धता 23.5 घंटे हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जिस गति से हमने आगे बढ़ाया है, हम और राज्य मिल करके, उतनी गति से शायद ही किसी और देश में, दुनिया में किसी और देश में भी इतना तेजी से बढ़ा हो।
हम लोगों ने जो एनडीसी में हमने प्लेज किया था COP21 में कि बाय 2030 तक हम अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 40% कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, वो हम 2021 में अचीव कर लिए, 9 साल एडवांस में। अपने एमिशंस इंटेंसिटी को भी हमने 33% घटा दिया 2019 तक, वो भी 11 साल एडवांस में। ग्लासगो में जो हमने प्लेज किया था वो भी हम अचीव कर लेंगे। ये सब प्रगति का हम लोगों ने जायजा लिया। जो ग्लासगो के टारगेट्स हैं कि 2030 तक हम अपने क्षमता का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, उसका जायजा हमने लिया कि वह कैसी प्रगति है और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। उसमें जो जो सामने में कुछ हर्डल्स आ रहे हैं इसकी चर्चा की हमने। जैसे कि एक GIB करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र को घेर दिया गया है, वो एक हर्डल है, इसकी चर्चा हुई। और गति को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस में हमने सुधार लाया है, बदलाव लाया है, इसकी चर्चा हुई। अब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में हमने राज्यों को और छूट दी है। जिसके पास अगर हाइड्रो ज़्यादा है तो हाइड्रो से उसका पूरा पूर्ति कर सकता है, जिसके पास विंड ज़्यादा है वो विंड से कर सकता है, सोलर ज़्यादा है सोलर से कर सकता है। इससे राज्यों को फ़ायदा हुआ। हम लोगों ने कुसुम योजना का डिस्कशन किया, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, डिमांड बढ़ा है। हमारे पास जितना आवंटन था सब हमने आवंटन कर दिया, फिर भी राज्य और आवंटन मांग रहे हैं सोलराइज करने के लिए कृषि को। उसमें हम लोगों ने नियम में बदलाव किया ताकि राज्यों को और सहूलियत हो। अब सभी राज्यों को हमने फ्रीडम दे दिया कि आप खुद बिड करके अपना लगाएं, केंद्र बिड नहीं करेगा। ये भी उनको पसंद आया। हमने ये भी कहा कि जहां राज्यों को सब्सिडी देने में कठिनाई है, आप केंद्र सरकार सब अपनी सब्सिडी देगी और बाकी किसान लगाने को तैयार है तो वो भी हो सकता है। तो प्रगति हमारी उसमें भी संतोषप्रद है। रूफटॉप के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया कि रूफटॉप को आगे बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर के रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाँ साहब कैसे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, और मोटा मोटी हमारी स्थिति ठीक है। उसकी गति को हम लोग और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है, तो हमको कैपेसिटी एडिशन भी करना है। इसके बारे में भी चर्चा हुई। चैलेंजेस के बारे में भी ये चर्चा हुई कि साहब कैसे हमारा डिमांड बढ़ रहा है। हमारा डिमांड अगस्त महीने में 20% बढ़ा, ये सितंबर महीने में फिर 20% बढ़ा, अक्टूबर में भी 20% बढ़ा। इतनी तेजी से डिमांड बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने इतनी क्षमता ऐड कर दी थी कि पहले हम सरप्लस हो गए थे, अब इतना तेजी से डिमांड बढ़ रहा है तो हमको और क्षमता जोड़नी है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उस क्षमता जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जो कि असेसमेंट करता है। वो सिस्टम है जॉइंट सिस्टम है। हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं, ये लोग साथ बैठ करके रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान करते हैं। इसको अंग्रेजी में रिसोर्स एडिक्वेसी करते हैं। उस प्लान करते हैं कि 10 साल में कितना डिमांड होगा, उसके लिए कितने क्षमता की ज़रूरत है और उसको कैसे लगाया जाए। उसमें रिन्यूएबल कितना हो, थर्मल कितना हो, हाइड्रो कितना हो। तो ये रिसोर्स प्लानिंग बहुत सारे स्टेट्स के बारे में हो गई है और कुछ स्टेट्स के बारे में प्रगति में है। तो हम अब रिसोर्स प्लानिंग करके हम कैपेसिटी एडिशन करते हैं। कैपेसिटी एडिशन की गति को हमको बढ़ाना है क्योंकि हम लोग का डिमांड खूब तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा देश तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसीलिए बिजली का डिमांड भी 20% के दर से बढ़ रहा है। तो हमको अपना पावर कैपेसिटी का भी एडिशन तेज़ी से करना है। तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स का कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का भी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। बढ़ते हुए डिमांड मीट करने के लिए हम लोगों ने यह भी कहा कि जो भी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है राज्यों के पास, वो पूरी कैपेसिटी पर चलनी चाहिए। ये भी हमने कहा कि ये बहुत आवश्यक है। आप अपने सब क्षमता को पूरी कैपेसिटी पर चलाएंगे तभी जा कर के आप और ऊर्जा हमसे मांगेंगे तो हम देंगे। ये नहीं हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी कम चले और आप हमारे रिजर्व से मांगिए, ये दोनों नहीं हो सकता है। तो इसकी चर्चा हुई। हम लोगों ने जो सिस्टम है उस सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया, जैसे कि हमने आपसे कहा कि अब ये बिजली की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे हो गई और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे। लेकिन और भी सिस्टम को हमको इम्प्रूव करना है RDSS के अंतर्गत। तो RDSS स्वीकृत हुआ है, उसका प्रगति शुरू हो गया है, काम होना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी और गति चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। एक चर्चा तो ये भी हुई कि चूंकि हम लोग इतने तेज़ी से और पूरे देश में हम काम करा रहे हैं, तो जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, इक्विपमेंट के सप्लायर्स
और जो वेंडर्स हैं जो कि लगाने वाले हैं वो अपना दाम बढ़ा दिए हैं, तो वो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग एक्स्ट्रा दाम नहीं देंगे, रिजनेबल प्राइस रहेगा वही देंगे, तो इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ये सब सारी बातें पे चर्चा हुई। कुल मिला करके हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने आपस में यही सोचा कि साहब हम लोगों ने अभी तक ठीक ठाक काम किया है, ऐसी को हम लोग को आगे जारी रखना है। हेलो सर, एक सेकेंड। हाँ, स्टार्ट। हाँ अच्छा, हेलो। देखिए तो सब लोग हाथ उठाएंगे, मिश्रा जी जिसको बोले वही बोलेंगे। चलिए सर, प्लीज स्टार्ट, एक वहाँ से कर। सर, पहले बोलो प्लीज। सर, in spite of we doing well, what वी आर measures? डूइंग वेरी वेल, थैंक यू। Okay. What measures are you taking to meet increasing demand of power? Or whether you are satisfied with those measures? No, this is a great challenge. You know, the increasing demand for power is a great challenge. It's a great challenge, number one, because it indicates that our country is growing. And so I'm happy that the demand is growing, because that's a clear indicator that our country is growing, our economy is growing. What we have done is that, number one, we monitor every capacity, and we make sure that every capacity is scheduled, right? Whether it is central or whether it is based in the state, or whether it is IPP, or whether it is domestic coal-based, or whether it is imported coal-based plants. All capacities have to run. And we are going to come out with we have already given directions, okay, that every capacity will be on schedule, will declare their capacity. Every plant will declare their capacity and be available. We are also going to come out with a rule, and that rule is that you will get fixed cost, fixed charges only if you offer your capacity. Either your PPA holder will schedule it, or you will offer it in the exchange. If you don't do this, you will not get your fixed charge. That rule is coming. So nobody can keep their capacity. So that is one thing which we have done. The other thing which we have done is we have kept some gas-based capacity on standby. Another thing which we are doing is that we are adding storage. We are going to add more and more storage. We already have about 40,000, 50,000 megawatts of thermal under construction. We are starting a lot of hydro, which are under construction, but all these have long gestation periods. So the faster it will be renewable with storage. So that's what we are at. And we have added renewable energy capacity, and we are adding renewable energy capacity rapidly. Last year we added almost about 15,000 megawatts we commissioned. This year again we'll commission approximately the same quantity. So we are meeting the demand. The demand went up to 241,000 megawatts. We met it. Yeah. Whether is there any difficulty in transmission and No, distribution? there is no difficulty in transmission. We have made sure, as I said, our transmission is one of the best transmission systems in the world. So it's working. And we are strengthening it. We are strengthening it. In fact, when we announced this plan of 500 gigawatts or 500,000 megawatts of renewable energy capacity, we came up with a transmission plan. We published it. Sir, S.K. Bharadwaj from Global Voice. Yes. Sir, S.K. Bharadwaj from Global Voice. हाँ. सर, लंबे समय से देख रहा हूँ कि आप राज्यों के साथ मिलके और उनके साथ सहमति बना के काम कर रहे हैं। कंज्यूमर को इसका लाभ कब तक मिलेगा? कंज्यूमर को लाभ का मतलब है कि हर राज्यों का टैरिफ अलग अलग क्यों हो रहा है जब सारे सहमति से काम कर रहे हैं? देखिए, कंज्यूमर का लाभ तो ये मिल रहा है कि हम लोगों ने जनरेटिंग सेट को इतिहास कर दिया। अब जनरेटिंग सेट आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा तब, जबकि पहले जो डिमांड हमारा इतना बढ़ गया, 50-60 हज़ार मेगावाट बढ़ गया, लेकिन फिर भी जनरेटिंग सेट को हमने हिस्ट्री कर दिया। अब ये बिजली उपलब्ध हो रही है शहरी क्षेत्र में करीब 23-23.5 घंटा, ग्रामीण क्षेत्र में करीब 22 घंटा, तो ये कंज्यूमर को लाभ हुआ। टैरिफ अलग अलग इसलिए है क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हर राज्य के अलग अलग अपना जनरेटिंग प्लांट्स भी है, तो उसका अलग अलग दाम है जनरेटिंग करने का। और वो कुछ तो अपने प्लांट से पावर लेता है, कुछ वो दूसरे प्लांट से खरीदता है, प्राइवेट पब्लिक, मतलब कि सेंट्रल प्लांट से खरीदता है, प्राइवेट सेक्टर से खरीदता है, अपने प्लांट से पावर लेता है, हाइड्रो से पावर लेता है, रिन्यूएबल एनर्जी से पावर लेता है। ये सब का जो पावर कॉस्ट से जोड़ करके पावर सप्लाई करने का कॉस्ट बनता है, ट्रांसमिशन कॉस्ट उसमें जुड़ता है, व्हीलिंग चार्ज बनता है। हर स्टेट का अलग एक रेगुलेटरी कमीशन है, टैरिफ हम नहीं तय करते, कोई नहीं,
वो तय करता है रेगुलेटरी कमीशन। हर राज्य का अलग रेगुलेटरी कमीशन है जिसका कि बहाली राज्य करता है, और वो रेगुलेटरी कमीशन तय करती है कि उस राज्य में कितना टैरिफ होगा, ये रेगुलेटरी कमीशन तय करती है। हम लोगों ने सिस्टम सुधार में क्या क्या किया है? सिस्टम सुधार में हम लोगों ने पहला काम तो ये किया कि हम लोगों ने कहा कि जो सबसे सस्ता पावर सोर्स है पहले वो चलेगा, उससे पर्याप्त नहीं होगा तब उससे ज़्यादा महंगा है, तब उससे ज़्यादा जो महंगा है। अब तो लेकिन स्थिति ऐसी है कि इतना डिमांड हो गया कि मेरा पूरा जितने पावर प्लांट्स हैं सब चल रहे हैं, सस्ता हो महंगा हो लेकिन सब चल रहे हैं पावर प्लांट्स। लेकिन एक वो सुधार हमने ये किया था। दूसरा सुधार हमने ये किया था कि साहब आपको ये आप थर्मल पावर प्लांट हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी लगाइए, आप दोनों को मिला करके चलाइए। उससे क्या होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का दाम कम है, तो दोनों मिला करके ये सप्लाई करने से दाम कम होता है। ये दूसरा काम ये किया हमने। तीसरा काम हमने ये किया कि हमने कहा कि आप जैसे कि किसी पावर प्लांट के साथ आपका 500 मेगावाट का करार है, पीपीए है सपोज, और उस 500 मेगावाट में से अभी आप सपोज उत्तर प्रदेश हैं, आप 500 मेगावाट आप करार किए हुए हैं किसी प्लांट से, आपको अभी 300 मेगावाट ले रहे हैं, 200 मेगावाट बैठा हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो 200 मेगावाट भी अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उसको वो एक्सचेंज में देगा, तो एक्सचेंज में ज़्यादा कैपेसिटी आवेगा तो दाम कम होगा। ये सारा व्यवस्था। नेक्स्ट यस Sir, Rishi from the Hindu business. Sir, Rishi from the Hindu business line. दूसरी बात पे Sir, I have two questions. First on आगे आ जाओ। Sir, first on the coal import, as you have impressed upon the states, is there a idea with the center of how much coal would be required? Because last year the power ministry off record had said that if we had not imported in ये December- इसके बारे में चर्चा हुई मोटा मोटी। ये अभी मंगा लीजिए तो कहाँ गए? मोटा मोटी विभिन्न महीनों में जो कोल का अराइवल है, आज जितना शॉर्टफॉल हुआ, अच्छा आप नोट कर लिए, मंगा लो भाई, मंगाओ मिल जाएगा सर। हाँ आज ये अप्रैल में शॉर्टफॉल हुआ 4.1 मिलियन टन, यानी कि जितना कोयला ये हमको डोमेस्टिक मिला, आज जितना कोयला हमको जलाना पड़ा, तो जितना कोयला हम जलाए, आज जितना कोयला आया उसमें गैप था 4.1 मिलियन टन, -4.1 मिलियन टन। 1.9 अच्छा मई में -1.9 मिलियन टन। वेरी गुड आलोक, नोट कर ली। 3.9 अच्छा उसके बाद जून में -3.9 मिलियन टन। ये शॉर्टफॉल रहा। अगर हम नहीं करते तो श्रीलंका में जो हालत हुई थी ना, उससे ज़्यादा बदतर हालत होता। जुलाई में -2.4 मिलियन टन, जो तुम्हारे पास था। अगस्त में 7.1 मिलियन टन, सितंबर में 8.3 सितंबर में -8.3 मिलियन टन, अक्टूबर में -6.6 मिलियन टन। अच्छा कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि एडिशनल डायरेक्टर पीआईबी ये सब फिगर, तो हम लोग वहाँ मीटिंग में डिस्कस किए, तो मिश्रा जी नोट कर लिया। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। Sir, April to October cumulative is over 14 million tons. 40 मिलियन टन से ऊपर। 14 से ऊपर। हाँ। तो सर- हम लोग का हालत ये श्रीलंका में क्या हालत हुई थी मालूम है ना? हम लोग का हालत उससे ज़्यादा बुरा होता। अभी मतलब कि पिछले महीने एवरेज शॉर्टफॉल प्रतिदिन करीब 2.5 लाख टन का था। 2.5 लाख टन पिछले महीने। उसके पहले महीने में उतना ही था, करीब 2.5 लाख टन का शॉर्टफॉल था। Sir, last time. देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मानिए कि कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, ये मानिए, इसको मानिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 20% अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है तो उतना कोल इंडिया के परफॉर्मेंस बेटर होने के बावजूद भी आपको ये शॉर्टफॉल है। तो इसमें ऑप्शन यही है, आप ये कि आप तय कर लें कि हम लोड शेडिंग करेंगे कि हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो हमने चूज़ किया कि हम ब्लेंडिंग करेंगे। उसका कारण है, ब्लेंडिंग हम आज से नहीं कर रहे, ब्लेंडिंग हो रहा है यहाँ पर 2007-2008 से, यानी कि इंपोर्टेड कोल कुछ ला करके मिक्स करके ब्लेंड करना। फर्क इतना था कि बीच में हमको 18 या 19 में
कोयला मंत्री हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोयला है तो आप लोगों से असल में ये ब्लेंडिंग आप कोल प्रोक्योरमेंट जेनकोज करते हैं, मतलब जनरेशन कंपनी अलग अलग अपना कोल का प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरेशन कंपनी को कह दिया कि इंपोर्ट करके इंपोर्ट ना करें, ब्लेंडिंग ना करें। तो हमने कह दिया, तो जो 40-45 मिलियन टन इंपोर्ट होता था वो घट करके 8 मिलियन टन हो गया, क्योंकि लोग हमारी बात मानते हैं। अगर जेनको से हम कहेंगे और नहीं मानेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, हमसे रोज उसका पाला पड़ता है। तो 8 मिलियन टन हो गया। उसके बाद फिर डिमांड हमारा एकाएक बढ़ गया, तो फिर क्राइसिस हो गई। ये वही फिगर, लेकिन मिश्रा जी ने हमको बता दिया, सेम आंकड़े हाँ, वही फिगर दे दीजिए हाँ। 22-23 में 38.1 मिलियन टन का शॉर्टफॉल था। हाँ बोलिए, नेक्स्ट मिश्रा जी। ये तो आप कोल इंडिया से पूछना होगा, दूसरा मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट Hello, sir. Wanted to ask, given that the power demand has increased so much, and there is there is no power crisis. and there is transmission inadequacy at the state level. Beg pardon? So two part question. One, have the States states में transmission bottlenecks. have expressed interest to increase their power generation capacity? Have the states expressed interest to improve their I told them power to. generation I told them to. capacity? And also, there is inadequate transmission. And I told them one thing. I said that we expect all the states to, number one, run their power plants at full capacity instead of at 40% and 50%, number one. Number two, I expect the states to set up more power plants in the coal-bearing areas. I told them that nothing stops you, for example, nothing stops Rajasthan from setting up a pithead plant in Chhattisgarh or Jharkhand or Orissa. Some states are doing that already. So that will reduce the logistics cost as well. And what is being done to bolster the transmission capacity at a state level, which is inadequate compared to the central level? As far as the state transmission is concerned, some states are doing it. We have recommended to them that they do it on a TBCB mode, so that they don't have to put money up front. So they'll be doing it. We also sort of suggested to the states that they can go in for monetization of the transmission capacity which already exists, which will give them released resources. Yeah. Yes, please. Hi, sir. Shweta Goswami from Money Control. Sir, you talked about resource adequacy and you talked about also storage to meet the increasing demand. But next year, for the next peak summer, the projection is around 256 gigawatt, and it could also surpass that. But what we have seen this time also, the main problem comes during the non-solar or the night hours. So in terms of resource adequacy and all the planning, I want a short-term description or explainer on what is being done to meet next year's demand. Because storage and renewables and even increasing capacity takes a while. So for next year, what's the plan? And also to meet the nighttime demand, because the deficit is always seen in this year, at least during the nighttime. Yeah. Now, what we noticed was, number one, we have substantial capacity which is in the offing, which is going to be commissioned. And by March, we expect about 12,000 megawatts to be commissioned. So that is 12,000 megawatts, thermal is to be commissioned. Now that more than makes up the gap. That and the fact that, when we keep monitoring on a monthly basis, in fact on a daily basis, as to where is the shortfall. I don't leave it like that. So which state is there a shortfall, and what capacity in that state was not scheduled. So right now, and that I did then also. So we found that the shortfall occurred in states where their capacities could not be scheduled because of unscheduled outage, etc. That is one. So that we are monitoring, and we have said that unscheduled outage will have to come down. This is matching. I have charts for every day. The second is that we have gas-based capacity which we keep on reserve. So that gas-based capacity we are going to
utilized to meet that non-solar hours demand. By and large, we also have ensured, and we shall continue ensuring, that the imported coal-based plants run fully and are put on offer, whether to the PPA holder, or if not to the PPA holder, then to the exchange. Otherwise, they will not get their fixed charges. So the gas-based plants will also not get fixed charges unless and until they schedule it. Yeah. Yes, please. Hello, sir. This is Rituraj from Mint. So you talked about rooftop solar. Where are you? Huh. You talked about rooftop solar. So there are several, despite the growth, there have been several laggings. Despite growth in rooftop solar, there have been several laggings. So how do you think of solving those issues in terms of rooftop solar? And did the conference also talk about issues like the Chungtham Dam of Teesta 3, where damage was witnessed? So did the conference also deal on those issues? No, as far as the rooftop is concerned, we discussed that, and we discussed ways and means of, expediting the progress in rooftops. Some people mentioned some difficulties with the regulators. Some regulators had come out, state regulators had come out with rules which discouraged people from going in for rooftops. So we have asked our ministry to compile such regulations, and then we'll take steps to make sure that those regulations are, corrected. We took note of the fact and that the average cost of supply to the domestic, the average realization in the domestic sector vis-a-vis the average cost of supply, the average realization is less. And so it will make sense for the domestic sector, especially the smaller domestic sector, to go to rooftop. So that we noted as a conference. That there's, regulations, some regulations come in the way, that has to be taken care of. Communication has to increase so that people understand that this is how we can do it. We also emphasize the need to have to impanel more integrators, so that the people who want to set up rooftop, they can access an integrator as fast as possible. We are already coming out with 5-star star ratings for solar panels, so that as a consumer they can judge that which is a better solar panel and which is a not so good solar panel. So there will be a 5-star rating, 1 to 5-star rating for solar panels and for inverters, so that the consumers are aware. And we also plan to have an integrated rating system for the vendors, right? So that the consumer can judge as to who is a better vendor, who is a better integrated, and who is not. And we also plan to have, let's say, benchmark prices for a 5-star module, 4-star module, 3-star module, so that we make it as transparent as possible, so that the consumer can decide. That is one. As far as the problems in Teesta are concerned, that we did not discuss. That is a separate thing. We have got reports, and I am holding a meeting, I think tomorrow afternoon it is, or day after tomorrow sometime, when we are going to review that, Teesta 4. Technical feasibility and commission. Similarly, good. That's another thing which Alok noted, which he brought out. I also said that we will put in place time limits. Right now, you see, the DISCOM has to give technical feasibility. So some DISCOMs do it in 10 days, some do it in 7 days, some do it in 30 days, 40 days. So we've said that we are going to limit it to 15 days. So suppose you say that, okay, I'm going to set up a rooftop, the DISCOM has to give technical feasibility, and that will be given in 15 days, otherwise it will be presumed that it has been given. Similarly, the commissioning. Some DISCOMs did commissioning in 7 days, some DISCOMs did commissioning in 35, 40 days. So that also we have put a limit. We have discussed and we finalized, we agreed that we'll put a limit of 15 days. That commissioning will be done in 15 days. Next question. सर Well done, Alok. You noted all the main points. सर रमेश सिंह भारत एक्सप्रेस से सर 2024 का चुनाव है और अभी भी देश में बिहार और झारखंड में बिजली 12 घंटे 14 घंटे आ रही है, तो 24 घंटे पूरे देश में बिजली कब तक आएगी सर, क्या लगता है आपको एज ए मंत्री? देखिए, नेशनल एवरेज हमने बता दिया। नेशनल एवरेज ग्रामीण क्षेत्र में 21 घंटे है और अर्बन क्षेत्र में 23.5 घंटे है। अब बिहार और झारखंड में ये डिसरप्शन है, तो दोनों स्टेट से हम चर्चा में हैं
कि क्या समस्या है. I'm in discussions with them. We'll try and sort it out. Yeah. Yes. Sir, myself, Amardeep Darade. I'm a international relations, public policy professional expert. Sir, my question... किस paper के? Sir, not from paper. I'm an independent person. This is a press conference. Yeah. No, this is a press conference. Next. So only the press, Hello. please. Sir, excuse me, sir. Sir, I am from Mathrubhumi newspaper from Kerala. So in states like Kerala, the demand is growing day by day, but they have the limitations to increase their capacity. What is the solution you are suggesting for? You said just like we have resource adequacy plan drawn up in consultation with states, resource adequacy plan will be drawn up for Kerala as well. So whatever is the capacity required, we'll plan for setting up. Some will be set up by Kerala by themselves. Some they will tie up from other generating plants. But the resource adequacy has been made mandatory. It has been made mandatory. So every DISCOM has to have resource adequacy. They have to tie up enough power to supply all the consumers who are registered with them. That is their duty. Sir, this is Shalini Sharma, this side. Right. Sir, this is Shalini Sharma from PSU Watch. From? PSU Watch. PSU Watch. Yeah. That's a newspaper. It's a website. It's a website. Okay. Yeah. Sir, you talked about gas-based power plants and your plan to bring them or put them on standby for meeting the surge in demand. Talked about what? Gas-based power plants. Yeah. So how will we ensure gas allocation? Are we again? No, you'll have to procure through GAIL. And Okay. when we do this, we also have GAIL there in the meeting. Okay. Yeah. And my second question is pertaining to RDSS. So you spoke in the morning about the need to fast track RDSS implementation. So the implementation was already being done in a time bound manner. So could you please help me understand Now, what you were see, the gaps you see, this is a conditional scheme. To be able to qualify, the concerned distribution company has to, number one, comply with the loss reduction trajectory, right? The states have to comply with the requirement of payment of subsidy in total. There should not be any, sort of gap between the subsidy which has to be paid and which has been paid. The tariff has to be up to date, right? So all these are requirements. Now, and if some state does not fulfill those requirements, then what happens is that sanction cannot be given. But the happy thing is that most states have fulfilled those requirements. That's why our losses have come down. That's one of the major reasons why our losses have come down. That's a happy thing. Last and every question. state has done it. Sorry. Last question. Good. Thank you. Last question. Sir, Meghna from DD News. Sir, you mentioned Where are about... Sir, here. Yeah. Sir, Meghna from Doordarshan News. I just wanted to ask, you mentioned about the discussion that happened in terms of the targets that we had set at COP26 in Glasgow. उस पर ग्लासगो में जो चर्चा हुई उसके ऊपर क्या चर्चा हुई, अगर उसके बारे में कुछ बताएं, जो हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी और उन सब जो टारगेट्स के बारे में उस पर कुछ चर्चा पे अगर कुछ बता सकें. I mean, this we discussed, and this is a pledge which has been made by a country. So we shall achieve this. Let there be no doubt about it. We discussed where we are at and what we need to do, and we shall do what needs to be done, and we shall achieve this. I have no doubts about that. We have emerged as a leader in energy transition. We'll remain leaders in energy transition. Have no doubts about that. We achieved our NDC, first NDC targets well in advance. The second NDC target of having 50% of our capacity from non-fossils, also we shall achieve in advance. You don't worry about it. By 2030, my total established capacity would be in the region of about 777, let's say 800 gigawatts. That would be my capacity by 2030. Now, 50% of that is 400 gigawatts, right? Now, as of now, I already have 186 gigawatts of established capacity, non-fossil, right? And I have about 80 gigawatts under construction. So that makes it 276 or something like that, gigawatts already. And I have to reach 140 more to come to 400. I'll achieve that.
I'll achieve that well in time. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank Sir. Thank you.